Then you put that.
Nice ICSE, na? Yes, sir. So where did we stop in the last class? तो अपना नाम बोलते जाओ एक लाइन से नाम बोलो ईशान क्या नाम है ईशान ओके तुम्हारा नाम इसका नाम क्या नहीं तुम्हारा इसका नाम क्या है CALEB अच्छा Caleb how do you pronounce it Caleb does it have a meaning what does it mean loyal in English Latin okay so loyal honest loyal grateful right loyal is grateful okay your name Anant Kala Kala या कला ओके काला 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 ये सब भी सेंटेंस सुना है और कौन है पार्थ सोनटके यशवंत सोनटके यस सर 100% या 100% यस 100% next what's your name Nika Tiwari okay Devasmita. Yes. Devasmita. How do you pronounce it? Devasmita. Devasmita. Okay. Manasvi. Manasvi Nikam. Devasmita Behera. She's Uriya. 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 Right? From Uriya. Okay, online we have Christy Dubey, then we have Vivaswat, Tahir, and Ada. Ada, why your video is not on? So my internet connection is a bit unstable, but I'll keep my video on. Okay. So but don't sleep and attend, no? You have to sit and attend. Okay? All right. Okay, where did we stop in the last class? Okay. Where did we stop in the last class? We have completed the first chapter, right? What about numericals? Screw gauge. We have completed all the numericals also, right? Which numerical we were doing, or we have finished it? Did we do the numericals in this? Yes, sir. All numericals done? Okay, that means we have to start with the next chapter. We had started it already, or we have to start? We have started. So till what? Till which topic I had taught you? Yeah, sir. So we have to start with motion in one dimension. In one dimension.
So what is motion in one dimension? Huh? Yes. Motion in straight line. In a straight line, right? So it means that is motion in a straight line. Motion in one dimension means motion in a straight line. So generally, what is the example then? That's going from point to point. Yeah. So any 2 points, right? If the motion is taking place in a straight line, then it is an example of motion in one dimension. So there could be 2 types of motion: horizontal and vertical. Both are example of horizontal motion in straight line, or it could be vertical motion in straight line. Okay? So we are going to learn about motions of this kind, right? So to describe motion, so first of all, there are certain things we are supposed to know before we can actually get into it. So first thing that we'll discuss about is scalar and vector quantities. Did we discuss this? Did we discuss this in the last class? No, sir. No. So scalar quantities are those physical quantities which has only magnitude. Okay. So scalar quantities have magnitude only. It has magnitude only. So these quantities can be described just with their values. Magnitude means values. For example, you have mass, right? Length, time. Okay, so let us say you say 5 kg. What is the magnitude? Right? Length, say 100 meter. Time, 20 seconds. So all of these quantities have only value or magnitude, right? There are certain other quantities which are called as vector quantities. What is a vector quantity? Apart from magnitude, it also has a direction. So to describe a vector quantity, you have to specify its magnitude as well as direction. So it has both. It has both magnitude and direction. So example. So examples of vector quantities are displacement, velocity, acceleration. So I can't see the full board. It's not visible. Wait. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So you have displacement, velocity, acceleration, force, right? These quantities will have to have the displacement is, let's say, 5 meters. Okay, towards eastward.
Let's say it is going 5 meters towards east. So you are specifying the value, which is magnitude as well as direction. Likewise, you have 20 kilometer per hour. AMPH. Okay. Towards north. Right? So on and so forth. Like acceleration. So we are going to discuss all these quantities as we go along. So these are some of the quantities which cannot be described if we only provide its magnitude. You also need to have its direction. Okay? Is that clear? So first note till here. Keep the bags inside. Keep the passage clear. If you go down, today's date also. Every lecture you should write with the date. What is the date today? 13. Okay, can I erase the left side? So if I'm not explaining, okay, that time you can keep writing whatever I've written on the board. Value. Magnitude means value. You will, let's say you have 20 kgs. So the two masses, how will you differentiate? By their value. Right? Your mass is, let us say, 50 kg. The other oil could be 45 kg. So that's how you compare, right? So the magnitude of the value is different. These are basically two examples. So horizontal motion is very common, like motion of a car on a road or train going on a railway track, right? That's so. So this is train. Railway track. Or motion of a car. What about example of vertical motion? Rocket. Rocket or motion of lift. Take simple examples. Motion of lift. Rocket is not how rocket goes, just straight. Straight. Yes. Is it? It goes straight for some time, then it turns. So lift. Lift is clear straight line, right? Motion of lift. So what is the motion of lift? It goes up, it comes down. Right? So object, rocket, lift up. That is also correct.
Launch is straight. No, if it is not launch straight, it will go and hit some building. Yes, sir. Oh, yeah. It's scalar, ER or AR? Let's check. AR. AR, yeah. Scalar track. Scalar. It is A, not E. Now let us define what is motion. So let's see what is position. To describe motion, right, we need to understand position. The location, सर मोशन लिखना है कि पोजीशन position, motion chapter है उसमें जो terms आ रहे हैं ना. What is position? We are going to describe that. Location of the body at any instant is described by its position. ठीक है? So for a horizontal motion, right, along x-axis, so if it is x-axis, it's like x1, x2, x3. Okay, so on the x-axis, it is given by x coordinate, right? And for vertical motion, right, it will be given by y coordinate. Okay. So it is denoted by x or y coordinate. Okay. So whenever an object is at any location, how do you specify its position? By its coordinate. Okay. How to describe the position of an object? By its x or y coordinate. Right. Let us define what is motion. When do we say that the body is in motion? When do we say the body is in motion? when it is moving. So when its position changes with respect to its surroundings. When the body is moving, let us say initially it was here at the start of motion. After some time it reaches position B or C. So what is changing? At A its position is 0. Then x1, x2, so on and so forth. So what changes is position. So a body is said to be in motion. Said to be in
when its position changes with respect to its surroundings with time. Yes, a body is said to be in motion when its position changes. WRT means with respect to its surroundings with time. Okay? So then we say that the body is in motion. However, if its position does not change, then it is said to be at rest. ठीक है? So rest में हम बोलते हैं when its position is not changing with respect to time. But अब जो घपला है वो हम देखते हैं. घपला घपला देखो. Motion and rest is a relative concept. Relative. Concept. ठीक है? इसका मतलब क्या होगा? मतलब मोशन और रेस्ट एक ही टाइम पे नहीं हो सकता. दोनों के सेम टाइम पे नहीं हो सकता. हो सकता है. कैसे? वो घपला. ठीक है? The body may be in motion or at rest at the same time. We'll see. इसके लिए बोलते हैं कि मोशन और रेस्ट डिफाइन तो हमने ऐसा किया. यहाँ पे टॉपिक में लिखो मोशन एंड रेस्ट. Change the topic, motion and rest. So it is a relative concept. जरूरी नहीं है कि जो बॉडी रेस्ट पे दिख रही है वो एक्चुअली रेस्ट में हो. Let's see how. अदा विवाश्वर वीडियो ऑन करो. So नेट बी के बोल दिए. ठीक है. मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. इसका क्या मतलब? इसका मतलब that is a body can be simultaneously at rest or in motion depending upon the observer. बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है वो डिपेंड करता है कि हु इज ऑब्जर्विंग दैट मोशन. कि नहीं? क्या होगा इसमें? बताओ एग्जांपल.
Huh? So we'll discuss this. A body can be simultaneously at rest or in motion depending upon the observer. देखो, with respect to a short form. With respect to, इसका short में W1. देखो, समझो ये रोड है और इसके दो कार जा रही है. ये कार A है. ये कार B. ठीक है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं. समझो ये भी 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं. ऐसे ऐसे जा. और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर था उनके बाजू में. इसको हमने नाम दे दिया सी. क्या नाम है इसका? सी. ठीक है. Yes. अभी ए समझो ये ऑब्जर्वर है ए. इसका ड्राइवर अगर इस कार को देखता है, ठीक है, तो will the distance between the two cars change ever? No. No, they are moving with the same speed. Doesn't. तो ये इसको हमेशा अपने सामने उतना ही दूर ही दिख रहा है. So is this car's position changing with respect to this car? ठीक है. So motion of B is at rest with respect to A. B किसके लिए रेस्ट पे है? A के लिए. What about C? Whereas B is in motion with respect to C. So B is simultaneously at rest as well as in motion. कौन डिसाइड करता है? ऑब्जर्वर. समझ आए? ऐसा है. Who is observing the motion? वो डिसाइड करता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा. अंडरस्टूड? ऐसा है. इसलिए मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. ठीक है. अच्छा, इज सी इज एट रेस्ट? No. Yes. Yes. है ना, एक्चुअली में सी रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू कार. कार मोशन में है कि नहीं? Yes. तो सी से ए भी दूर जा रहा है, बी भी दूर जा रहा है. सो सी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोड. और दूसरी चीज क्या रेस्ट पे? रोड. समझ गए? सो whereas C is in motion with respect to both A and C. तो रेस्ट पे है ना, लेकिन A और B के लिए क्या है? C मूव कर रहा है. उनको क्या लग रहा है? C उनसे पीछे जा रहा है. एक्चुअली जब कार यहां से ऐसे गई तो A को और B को क्या लगा? C पीछे जा रहा है. समझ आए? तो ये, लेकिन एक्चुअल में तो सी रेस्ट है. ठीक है. तो मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर. क्लियर? सो देयर आर सम मोर टर्म्स. Let's become familiar with some terms associated with or related to.
क्वेश्चन है। क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी। फिर क्या है? एक्सेलरेशन। We are now going to learn about all this. To describe motion, we need to know all these concepts. What is distance, displacement, speed, velocity, acceleration, etc. ये लिख लिया राइट साइड? Can I erase right side? Online students, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, distance and displacement, speed and velocity. ठीक है, तो सबसे पहले what is distance? Let us understand it. डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम है। नहीं, तो फिर अलग-अलग वर्ड क्यों? Distance and displacement. Let us understand with the help of example. Let us say you have these 2 points. This is point A and this is point B. Basically, this represents 2 positions. Okay. So position, let us say this is Mumbai, right? And this is Pune. These 2 locations on the map, Mumbai and Pune. So there may be multiple routes to reach Pune. Okay. So you may take like the old Bombay Pune highway, घूम के पहुंच गए। हाँ? बहुत रास्ते। तुम कितने जानते हो? कौन सा? ओल्ड हाईवे न्यू एक्सप्रेस है। और अगर तुमको कल्याण से अहमदनगर होके जाना हो तो नासिक। What did I say? There are different possibilities. ठीक है? अभी ऐसा थोड़ी ना है कि मुंबई वाला सिर्फ यहीं से उसको कुछ काम हो गया उधर से भी जा सकते हैं। It's about possibilities. ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही हो। So understand. So there could be multiple route to go to Pune from Mumbai. Let us say this is route 1. The other route is, let's say the new route like the expressway, straight है। और orange जो हमने बताया, से अहमदनगर घूम घाम के पता नहीं कहाँ से घूम के ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड। ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस किलोमीटर में कितना हो रहा है समझो। ये हो रहा है तुम्हारा 160, लेट्स से 120। ठीक है, ये वाला हो गया तुम्हारा 120, ये हो गया तुम्हारा 400। ठीक है सर 500 किलोमीटर तो आपका। Don't miss the point. Understand distance and displacement. So there could be different routes, okay, to go to a other point between A and B. ठीक है? So route 1 और 2 में क्या फर्क है? छोटे हैं। एक तो 2 is the shortest distance between A and B. है ना? It is shortest. अच्छा, दूसरा क्या है? उसका डायरेक्शन कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। So route 2 is unique. It is shortest distance between A and B, and it is in a fixed direction. ठीक है? अगर तुम डायरेक्शन मैप लेते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है? अगर तुम्हारा ये डायरेक्शन है, तो अब देखो
इसका डायरेक्शन शुरू में क्या था, नॉर्थ, फिर क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, फिर क्या हो गया ईस्ट, फिर क्या हो गया साउथ ऑफ ईस्ट, फिर क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। हाँ, ये चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, बदल रहा है. Does it have a fixed direction? नहीं. Same is the situation here. So the direction is not fixed. ये जो है 1 and 3, okay, and even 2, they are all distances. Distance क्या होता है? The actual path length covered during the journey. What is distance? Distance is actual length of the path, actual length of the path covered by the okay, what is distance? It is the actual length of the path covered by the body between any 2 points. What are these 2 points? Positions. Okay? So start of journey is called initial position. The end of journey or destination is called final position. This is initial position. This is also final position. ठीक है, इसको start है destination भी बोलते हैं. Start हो गया initial position, reach end हो गया तुम्हारा destination. ठीक है, अलग अलग टर्म से एक ही चीज बोलते हैं. ठीक है. So distance का और क्या फीचर है? It has no fixed direction. So it has magnitude only. And no fixed direction. तो distance कौन सा है? All 1, 2, 3 are distances only. Okay. 1, 2, 3 are distances only. So what about displacement? AB is displacement. Straight, root 2. So root R and 3. Okay. Okay. Path 1 and 3 represent distance. So 2. 2 is distance in a 2 का value. Path 2 is the shortest distance. Given or fixed direction. So there is some
unique feature associated with path 2. It is one, it is shortest distance, and it is also in a fixed direction or given direction. This is called displacement. Shortest distance. Okay, so what is, which kind of quantity is displacement? Scalar or vector quantity? Displacement is? Scalar. Displacement is vector. Displacement is vector. No, scalar. Scalar say? So what is online students? What do you think? Can you repeat, sir? Displacement is vector or scalar quantity? Vector. Okay, why? I believe displacement will have a magnitude as well as a direction. Correct. So displacement has both magnitude as well as direction. What is the magnitude for displacement given in the diagram? It's on the board. What is the magnitude of 120. displacement? 120. No, sir, nothing. What is the magnitude of the displacement shown in the diagram? 120 kilometer 120 kilometer. And what is the direction? east. East. Got it? What is the magnitude of displacement? East. And what is its direction? 120 kilometers. Direction is 120 kilometers. No, sir. Direction is Distance is 120 kilometers. Okay. So this is magnitude. And direction is east. Okay. Are you able to identify now? Whereas path 1 and path 3 has only magnitude, no fixed direction. Is that clear? Therefore, path 1 and path 3 is distance. क्योंकि direction है ही नहीं उसको. ठीक है? So are we good till here? भी पता चलेगा. तुम बस हंसते रहो यहाँ. लास्ट में रोना. चलो. I'll now give you an illustration. और इसको तुमको सॉल्व करना है. So you can indicate the direction for a straight line motion in two ways. I said the straight line motion can be along x-axis, okay, or y-axis. or y-axis. So in this case, do you have y-axis? Do you have y-axis in this? No, because both are horizontal motion only. East west, south to north. Okay, both are in the plane only. So the vertical direction will be like this. Okay, above and below. Okay. So here, I am going to give you an example of motion, and you have to actually calculate the distance and displacement for it. Okay. तो इसमें डायरेक्शन को खाली या तो ईस्ट लिख दो या फिर you can write plus. Positive x-axis. Direction left to right is plus. How is the body moving from A to B, left to right? That is plus. If it was moving in this direction, then it will be negative. Always this is the positive direction. Right to left to right is positive, and right to left is negative. Okay? वैसे ही bottom to up is positive because positive y-axis. And if the motion is from top to bottom, then it is negative. Okay? So when I am writing displacement,
plus 120 kilometer. What does it tell you? Object is moving 120 kilometer towards right or towards east. Is that clear? If it was minus 75, then yes, object is moving 75 kilometers towards west. Is that clear? So note the direction of motion in a straight line is represented by a sign or left to right and upward. Okay. Negative sign or right to left and downward. Understood? How to mention the direction of motion using plus and minus sign. Okay. Now suppose the motion is taking place on x-axis. Horizontal motion is taking place on x-axis. Let's say this is x-axis and the values are given in meter. Yes, sir. Okay, so now I'm giving you different motions. Let us say the object starts from A. At A, let us say it is at 0 position. Okay? From 0, now it is going to B and to C. Okay? So these are different positions. So if it is straight line motion, the motion is either left to right or right to left. Okay? That is what is one dimensional motion. Okay? So these are various positions of. Can I erase it? Yes, sir. Okay, so now I will various motions are taking place now. You have to tell me what is the distance and what is the displacement log. Yes. Okay, so first motion is from A to B. So tell me what is the distance and what is the displacement? 100. Distance is 100. 100 what? Sir, here meter, 100 meters.
Unit is in the. What is displacement? Displacement is 100 meters. Displacement is also. 100 meters. That's it. What about direction? ये किधर है? ईस्ट में है ना? तो कैसे लिखते हैं हम डायरेक्शन? प्लस कैसे लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट में हमको दोनों देना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्टेंस में डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर, इसलिए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुमको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन के लिए बताओ। ए टू बी टू सी है ना, ए टू सी कैसे है? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300। 300 किसने बोला? मैंने बोला था। अच्छा, तो कितना है फाइनली? 200। सो यहाँ से यहाँ कितना होगा? ये होगा 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। यहाँ से यहाँ भी 100 है और 100 से 200 भी 100 ही है। तो डिस्प्लेसमेंट में +100 इज इक्वल टू +200। अच्छा, प्लस 100 इक्वल टू कितना? सर मैं पहले पूरा आंसर बोल दिया था, इसलिए मैंने सिर्फ 200 बोला था तुमने। सर +200 बोला था सर, इसको अच्छा ठीक है, प्लस 200 बोला। ठीक है, अगर बोला तो अच्छी बात। चलो थर्ड, ए टू सी टू बी, तुम बताओ। अभी आई विल आस्क, वही आंसर करेगा। ए टू सी टू बी कितना हुआ डिस्टेंस? इसमें डिस्टेंस कितना? +200। हाँ, फिर माइनस क्यों? +300 meters plus 200 plus 100 is equal to +300 meters. 200 प्लस 100 मतलब 300 meters. ये तो ठीक है। डिस्टेंस में क्या लेते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ। डायरेक्शन लेते हैं डिस्टेंस में? Yes, sir. पर आपने बोला टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ का पाथ लेंथ कितना है? 200। फिर यहाँ से यहाँ का पाथ लेंथ कितना? 100। टोटल 200 चला, फिर 100 चल के वापस आया, तो कितना हुआ? 300। डिस्प्लेसमेंट बताओ। 200 plus 200. हाँ, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से सी, फिर सी से बी, पूरा पाथ कैसे? -100। कितना हुआ? is equal to +100. +100। वेरी गुड, समझ आया? Answer. देखो, व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? इसमें फाइनल पोजीशन क्या है? बी। और फाइनल ए और बी मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 100। और 100 कौन से साइड में? राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है यहाँ पे, है ना? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो समझ आया कैसे मिला अपने को? +200 जाके फिर -100 आया, फिर भी राइट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको सेंस ऑफ पोजीशन बताता है, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बेटर चीज है, ठीक है? हमको उसका एक्चुअल सेंस बताता है कहाँ पे है, ठीक है?
डिस्टेंस हमको सेंस ऑफ मोशन नहीं बताता, ठीक है। चलो अभी क्या है 4. This time online students will answer. Srishti. Srishti, tell me what is the distance here? Srishti, can you listen to me? Yes, sir. Distance. What is the distance? 200. 200. A to C will be 200. Then C to A will be another 200, right? Yes, sir. So what is the total distance? 400. 400. Okay. Vivashwar, Yes, sir. displacement. So, can you tilt your screen to the right? दिख नहीं रहा. No, you have to see this and answer, na? I am asking you for this motion. A to C and then C to back to So it will A. be plus 200 minus 200. So plus 200 minus 200. What's the 200. answer? 0. 0. Is this correct? Displacement is 0. Because what is displacement? Shortest distance between initial and final position. So when the initial and final position are the same position, then the displacement has to be 0. Correct? Yes, The sir. displacement is 0. So which is right? Okay, now fifth motion. A to C and then D. Tahir, Yes, this- sir. what is the distance? Wait, see. 200 plus uh, 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 200. 300. Very good. Another 300 plus 300. So this will be how much total distance? 500. 500. What about displacement? Plus 200 minus 300 Very good. So what is the total displacement? minus 100. Minus 100. Good. Okay, understood? So the displacement is telling you that finally the body has reached 100 meter, 100 kilometer. How much is that? 100 meter to the left of the initial position. बोलो. कहाँ से यहाँ कितना है? A to C कितना है? और फिर C to A कितना है? अगर 200 गया तो 200 ही तो वापस आना पड़ेगा. Oh, now I get it. I was sleeping till now. ठीक है, ऐसे लाइन बना के देखो ना, ऐसे बना के देखो. आशीर्वाद दे रही है उसको. चलो, खुद का क्या? ठीक है. अभी सबको समझ आ गया? अभी सबको समझ आ गया? What is distance? What is displacement? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं. Everyone, okay? चलो, next. Now we'll go to discuss speed and what is speed? Speed and velocity. So the symbol for distance is S. Okay, the symbol for displacement is S bar. So this is not visible. Can you see? सर फिर आपका कुछ दिखाई Yes, देगा? sir. Yes, sir.
symbol for distance is s and displacement is s. उसके ऊपर में arrow है. Okay, so vector quantity is represented by direction of. Right, कोई symbol for speed is v and velocity is v bar. ठीक है, so हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन के साथ. What is speed? Speed is the distance covered by the body in unit time. So speed का v किसका है? Speed का v है वो. क्या कैसे आया? We are, I'm telling कि हाँ Distance का speed. d होता है, time का t होता है, इसका v ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Displacement का s होता है, distance का s होता है. हमने माना है ना going forward. Standard symbol है. मतलब ये तो ऐसा हो गया कि a को ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया है ऐसा. बचपन से इसको a ही बोल रहे हो ना तुमको. ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं 1, क्योंकि तुमको बोला है इसको 1 बोलना है. समझे, नाउन है ना, ये नाउन की तरह हो गया, इसमें कोई रीजनिंग नहीं. वैसे ही द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर स्पीड इज v. ओके, और वेलोसिटी के लिए v एंड ऑन टॉप एरो. तो वेक्टर क्वांटिटी में एरो भी है. इट इंडिकेट्स दे हैव डायरेक्शन आल्सो. नाउ हाउ डू वी डिफाइन स्पीड? Speed is the distance covered in some specific time. distance covered by object. Object या फिर body कभी भी मैं ऐसा लिखता हूँ और unit time. Okay, distance covered by the object per unit time. So if in time, Sir, if distance is okay, if in time t, if distance covered equal to s, then in unit time, sir, what happens? sir. That's okay. Okay, now in time t, if distance covered is equal to s, so by unitary method in unit time, what is the distance covered? Therefore, in unit time, unit time, distance covered लिखा हो जाएगा s by t, correct? Yes, sir. t में अगर s कवर कर रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना करेगा s by t? तो वही तो स्पीड है. What is speed? Speed is distance covered per unit time. Therefore, t is equal to s by. आ गया. So speed is equal to distance upon time. लिख लो उसको. ठीक है. Speed is distance covered per unit. Speed का यूनिट क्या होगा?
What is the unit of speed? Yes. Kilometer per hour. Kilometer per hour. In SI unit? Meter per second. Meter per second. Meter, unit of distance is meter, time is second, meter per second. Okay, right, unit is per second. Okay. Now let us understand the concept of uniform and non-uniform motion. So speed basically gives us at what rate the distance is being covered. Correct? Whenever time is involved, you are actually comparing. Let's say you have two cars. If one is traveling at a faster speed than the other, okay, the one which is traveling faster is covering more distance in the same time. Correct? Speed is distance covered per unit time. Speed is distance covered per unit time. So when will we say that the motion is uniform and when it is non-uniform? So uniform motion में, in uniform motion, the body covers equal distances in equal interval of time. क्या हो रहा है? In uniform motion, the body covers equal distances in equal interval of time. Like हर सेकंड में उसने कितना कवर किया 10 मीटर, 5 सेकंड से कितना पहुंच जाएगा 50, है ना? लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? तुम घर से निकल के क्लासेस में सेम स्पीड से चल के आ जाते हो या कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा है तो स्लो हो गए, कहीं पे फ्री स्पेस मिल गया तो ज्यादा तेज चले गए, तो कैसा होता है मोशन रियल लाइफ में? नॉन यूनिफॉर्म. रियल लाइफ में हमेशा मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म. इट इज वेरी रेयर दैट यू विल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है? सो whereas in non-uniform motion, क्या होता है non-uniform motion में? Body covers unequal distances in equal intervals of time. यहाँ पे भी टाइम इज सेम. ठीक है? Like earlier, each second the body was covering 10 meters. Now, this situation, 1 second it covered 5, next it covered 10, then it covered say 6. So each second the distance covered is different. Note, most motion in real life are non-uniform. ठीक है? Real life motions are non-uniform only.
then instead of speed, when the motion is non-uniform, we describe what is called as average speed. Okay? तो भी हमारा स्पीड कभी भी एक ही तो रहने वाला नहीं है ना? सो देखो तो जैसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, लेट अस से ये डिस्टेंस है 500. So can you switch off this fan instead of the AC? कौन सा ऐसे बंद हुआ? सर आगे वाला अच्छा यही चल रहा था ना? तभी तो काय बंद कर दो नहीं नहीं चलने दो उससे, ठीक है, बाद में एसी चालू करें. सो ये हो गया तुम्हारा 0 and 500, ठीक है. तो ये कितना 100. तो समझो पहले इसको यहां से यहाँ 1 सेकेंड लगा, ठीक है. दूसरे सेकंड में इसने यहां से यहाँ कवर किया, और फिर यहां से यहाँ कितना लगा उसको, फिर से 1 सेकेंड, ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड में कितना चला वो 100 मीटर, सेकंड सेकंड में कितना चला 300 मीटर. 300 मीटर, फिर लास्ट सेकंड में कितना चला 100 मीटर, ठीक है. सर 3 सेकंड में 500 मीटर. हाँ मतलब है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है. नहीं हो सकता क्या 3 सेकंड में 500 मीटर? हो सकता है. हो सकता है, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, सो इज द मोशन यूनिफॉर्म? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कुछ और आएगी. यहाँ पे स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितनी है 150 मीटर पर सेकंड, और वापस यहाँ पे कितनी है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है. तो सेम और यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है. So this is not uniform motion. The distance is covered at a different rate. Speed basically gives you the rate at which the distance is covered by the body. Correct? लेकिन हमारा तो इनिशियल पोजीशन क्या है A और फाइनल पोजीशन क्या है B. So between A and B, now we will define a different thing which is called average speed. Average speed. अब average speed क्या है देखो, it is given as total distance upon total time, ठीक है. total distance upon total time interval. तो ये कितना आ जाएगा 500 upon 5, तो कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड. ठीक है. टोटल या एवरेज स्पीड क्या आ रही है, थ्रू आउट द डिस्टेंस स्पीड सेम नहीं है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या आ गई 100 मीटर पर सेकंड. समझ आ गया? तो दिस इज व्हाई इन टू डिस्क्राइब
the rate of motion for a non-uniform motion, we have what is called as average speed. ठीक है? तो अब जहां पे भी हमारा v है, v denotes average speed. ठीक है? v denotes average speed. इसके बाद में हमारे पास क्या है? Instantaneous speed. Instantaneous spontaneous है क्या? What is instantaneous speed? ठीक है? Instant का मतलब क्या होता है? Instant. Quick. That moment. Instant मतलब right now. Right here, right now. ठीक है? That instant. Like if the car is traveling, let's say you can't see left and right, okay? Okay, you have a vision. Let's say your eyeball is fixed, you can't see left and right. कार यहाँ तक गाड़ी तुम्हें दिखेगी नहीं, कब दिखेगी? जब तुम्हारे सामने है, फिर नहीं दिखेगी. So at the moment when the car was, Sir, मुझे 180 degrees. नहीं, I'm saying they're learning, right? It's a learning environment. What I'm saying is, what is the meaning of instant? Let's say, don't disturb us. Don't be a joker, okay? I mean, Sir, don't be a joker, right? Listen. So car is going straight in front of you, and you clicked a picture. Now, when you click the picture, the moment at that time will be printed on the photo. yes. At that time, what was the speed? When you took the picture, that is called instantaneous speed. So that is frozen in time, right? So that moment or that instant, whatever was the speed of the car, how to calculate that? So see, so how we have described speed? Distance traveled per unit time. So for that instant, car is anyway moving. So at that instant, and it is leaving you. That means it must have traveled very little distance in a very short interval of time. For what duration you saw the car? Very small duration. So instantaneous speed is given by distance traveled in a very small time interval divided by that small time interval. Is that clear? Is that clear? Yes. Because let's say the car was moving in front of you. So when you saw, this was the distance it traveled, and whatever the time it took to cover this distance, that time interval, and this distance. Okay, that speed is called instantaneous. Correct? So, that is distance traveled. It is the ratio of distance traveled in short time interval. Distance covered in small time. Divided by small time interval. Okay, let's say the distance traveled by 0.01 second. You divide second in 100 parts because the car just crosses you immediately. So distance traveled in that duration divided by 0.001 second. That will be the speed. Okay. So in automobile, you have a speedometer, right? Yes, sir. So the speedometer vehicle always shows instantaneous speed. Let's check whether this spelling is correct. Instantaneous. So in the speedometer, you have one more meter. Check what it is. Correct. What is correct?
Hmm? Yeah, A, right? This also. Is that clear? Yes. So the instantaneous speed is always indicated in the speedometer. ये टाइम पे जो velocity है वही speed है वही लिखा है, ठीक है? It also has another meter which shows you total distance covered. That is called odometer. What is it called? Odometer. Odometer. देखो उसमें क्या रहता है, ऐसे यहाँ पे किलोमीटर डिस्प्ले करते हैं. Then there is a ठीक है. So this is like whatever 50,000 kilometer. 50,000. जो टोटल अब तक चल चुका है गाड़ी, जब से गाड़ी खरीदी है और अब तक कितना चला, वो जो काउंटिंग है वो ये, दैट इज ओडो. Whereas speedometer is this. ठीक है. When the car is at rest, it will be 0. ये kmph में होता है, किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो दोनों है. तो ये वाला जो है वो स्पीडोमीटर है और ये है ओडोमीटर. ठीक. किसी न्यूमेरिकल में आ सकता है इसका रेफरेंस. ऑल राइट. तो आर वी गुड टिल हियर? Yes, sir. ठीक है. सो तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. So what is the difference between speed and velocity? अभी तक आया नहीं है वेलोसिटी पे. हाँ. एक छोटा सा डिफरेंस है. वेलोसिटी इज स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. सो एवरीथिंग सब में डायरेक्शन लगाते जाओ. सो Speed is a scalar So- quantity so and velocity- velocity is a वेक्टर क्वांटिटी. vector quantity. सो इट विल आल्सो हैव डायरेक्शन. Okay. ठीक है. तो वेलोसिटी में क्या कर लो, जैसे स्पीड का वेलोसिटी होगा, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज वेलोसिटी. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज rate of change of displacement, है ना? Displacement covered per unit time is velocity. ठीक है. या फिर distance covered in a given direction per unit time is velocity. देखो तुमने इसका क्या लिखा था स्पीड का. चलो अभी सब कर लेते हैं. I was going to tell you something, वो बीच में पूछ के वो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल. मैंने वो में बताने जा रहा था. ये लिख लो, यूनिफॉर्म के ऊपर लिख लो ब्रैकेट में कांस्टेंट. मतलब उसमें स्पीड कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मोशन. यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है नहीं है, है ना? क्योंकि हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट. ठीक है. यहाँ पे एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 150. ये नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. तो बाद में देखते हैं. वेलोसिटी विल कवर आफ्टर द ब्रेक. So how do you find this chapter as compared to units and measurement? Much better. Units and measurement is very heavy. Okay? Very heavy, very heavy. Not boring.